Good morning, students. Hope you are enjoying online classes. And as we are discussing chapter matter in our surroundings, and in our last lecture, we discussed about various states of matter, how a particular matter can exist in variety of states, and mainly three states: solid, liquid, and gases. For example, water. It exists in all three states in our nature. For example, in the form of snow, it occurs as solid. In form of water, it occurs as liquid. In form of water vapor, it occurs in gaseous state. So all these three states of matter can be changed into another, means we can convert solid into liquid into gas by heating, or we can again convert gas into liquid or into solid by cooling. So by changing temperature of any type of matter, we can change its state as well. And one more method by which we can convert various states, that is by applying pressure. So in this lecture, we'll discuss about the change of temperature on various states of matter. Means what happens when we heat or cool a particular type of matter. Let us see what happens when ice is heated. For this, we will perform one activity, and for which you require the materials, following materials: some ice cubes, filter paper, beaker, wire gauge, tripod stand, burner, thermometer, stirrer, shake करने के लिए, clamp stand. Now take few crystals of ice in beaker and then use that burner to heat and set up the apparatus like this and start heating the ice. But before starting the burner, note down the temperature, and this temperature will be negative because we have taken out ice from refrigerator, so it will be below 0 degrees Celsius and minus 10 around it may have temperature. Now slowly when ice is heated, the temperature will start rising, and after some time when ice starts melting, temperature becomes 0 degrees Celsius in the thermometer. And note down the temperature properly and carefully observe until the whole ice gets melt. जब तक सारी ice melt होती रहेगी, temperature change नहीं होता, and that temperature will be fixed at 0 degree Celsius. और जब सारी ice melt हो जाएगी, then further temperature will rise. Let us discuss these things, why this happens, and this process in which ice is changing into liquid is called melt. So now the process, as we have seen, when solid changes into a liquid at a fixed temperature, the process is called melting or fusion, and it happens at a fixed temperature called melting point, and at that time the atmospheric pressure remains constant, that is 1 atmosphere pressure जो हमारे atmosphere का है, उसी पे अगर ये process होता है, then it is termed as the temperature at which substance melts is called melting point. और melting point किसी भी substance का उसके अंदर कितनी क्लोजली पार्टिकल्स पैक्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मेयर होता है. हायर द मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्सेस. फॉर एग्जांपल, आयरन को आपको मेल्ट करना है, आपको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, बट आइस को जब आपने मेल्ट करना है तो वो बहुत सिंपल 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाती है, बिकॉज आइस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने आयरन में है. तो मेल्टिंग पॉइंट हायर या लोअर ये डिसाइड करेगा कि सब्सटेंस के अंदर forces of attraction कितने strong है. And melting point of ice, as we have done in activity also, it is 0 degree Celsius or 273 Kelvin. Now internally what happens to the particles when we heat a solid? As you know that solid or any kind of matter is made up of particles, तो particles की जो kinetic energy है, as we have discussed earlier, ये temperature पे depend करती है. तो what happens when we heat a solid? Kinetic energy of the particles will increase obviously. Secondly, particles start vibrating faster. जो पहले slow vibrate कर रहे हैं solid में, अब वो तेजी से vibrate करने लगेंगे. Third,
इंटरपार्टिकल फोर्सेस आर ओवरकम बाय द हीट सप्लाइड। अब फोर्सेस धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे तेजी से, ऑब्वियसली उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। अब एक टाइम ऐसा आता है जब पार्टिकल्स इतना ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट करते हैं कि वो अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, जो सॉलिड में उनकी फिक्स पोजीशन थी, एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फाइनली सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। और वो टेम्परेचर जिस पे वो सॉलिड स्टार्ट हुआ है मेल्ट होना, दैट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल द होल सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक सारा आइस या सारा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाएगा लिक्विड में, आप जितना भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो फर्दर टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो why the temperature remains constant during melting or fusion? This is because of latent heat of fusion. The term latent means hidden मतलब कुछ भी छुपा हुआ। तो ये एक ऐसी हीट है जो पार्टिकल्स के बीच में छुप जाती है जब वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट a solid into its liquid at its melting point at atmospheric pressure. कितनी हीट उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उससे पहले वाली हीट नहीं। सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट एक बार जब रीच कर गया, उसके बाद जब तक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, पूरा सॉलिड, एंटायर सॉलिड, तब तक जो हीट एक्सटर्नली उस पर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, दैट इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये लेटेंट हीट फर्दर टेम्परेचर राइज नहीं कर रही, बिकॉज इस टाइम पे इसका क्या रोल है, इट इज यूटिलाइजिंग टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, हेंस इट डजंट रेज काइनेटिक एनर्जी। उस टाइम पे हीट सिर्फ फोर्सेस को तोड़ने का काम कर रही है, पार्टिकल्स को दूर करने का काम कर रही है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती। दैट इज वाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक बार जब सारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, आफ्टर दैट अगेन टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस causes more cooling effect than water at same temperature due to extra heat ice absorbs as latent heat. This is again important. आइस जो है, अगर सपोज आपने कुछ ठंडा करना है अपने घर में, मिल्क या जूस, यू हैव 1 ग्लास ऑफ जूस और उसको आपने कूल करना है, तो यू आर प्रोवाइडेड विद 2 ऑप्शंस। एक तरफ आपको आइस दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेकेंडली यू हैव वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल यू यूज? ऑब्वियसली यू विल यूज आइस, बिकॉज आइस कॉजेज मोर कूलिंग इफेक्ट। वाई? आइस ने अभी वाटर में कन्वर्ट होना है, तो एट दैट टाइम इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, जो वाटर ऑलरेडी कर चुका है। वाटर में वो हीट ऑलरेडी है, आइस ही एक्स्ट्रा हीट जो एब्जॉर्ब करेगी वो उसी जूस या मिल्क से करेगी जिसमें आपने उसको ऐड किया। तो दैट इज वाई इट कॉजेज मोर कूलिंग, एंड दिस हीट दैट इट absorbs for changing into water is called latent heat of fusion. Now we discuss what happens when water or any liquid is heated. Earlier we have discussed what happens when solid is heated. Now we'll discuss what happens when a liquid is heated. For this we require certain materials, a round bottom flask, a glass beaker, and this flask must have some pumic stones, then wire gauge, tripod stand, thermometer, glass rod, iron stand, Bunsen burner, magnifying glass, distilled water, stopwatch, pumic stones pieces that we need to put in the flask, and we fill the water in the flask and cover the mouth of the flask with the help of a rubber cork or the stopper having holes. Now adjust thermometer with the help of iron stand and a glass tube or glass stirrer, you can say. Now heat this flask with the help of burner and start observing. Initially you will see that temperature rise faster, and as we have taken water at room temperature, तो room temperature से धीरे धीरे water heat up होगा and it will rise
and at a particular temperature, when the water starts boiling, you need to note down the temperature, and you will see until the whole water keeps boiling and it gets converted into vapor, the temperature remains constant, and this temperature for water is 100 degrees Celsius, and this is called boiling point of water. So as we have discussed, the process in which a liquid changes into its vapor on heating at a fixed temperature is called boiling or vaporization, and this temperature at which boiling occurs is called boiling point. मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, एंड प्रेशर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग. Boiling point is a measure of interparticle forces of attraction in a liquid also. जैसे solid के लिए same liquid, and boiling point for water is 100 degree Celsius और 373 Kelvin. ये temperature का Kelvin और Celsius में relation we'll discuss in this last slide. Next, what happens to the particles when we heat a liquid? Again, kinetic energy of the particles will increase when we are rising temperature, obviously. Then particles start moving faster in the liquid, and interparticle forces start over breaking, or these forces actually getting weaker by heat supplied, and then particles leave the boundaries of the liquid and start moving faster. अब particles जो liquid की boundaries में ही रहते हैं लेकिन heat करने पे वो अपनी boundaries छोड़ना शुरू कर देते हैं, and then liquid start boiling and converts into vapor at a fixed temperature, which is called boiling point, and temperature remains constant till the whole liquid turns into vapor. So why this temperature? Now again, the temperature remains constant during boiling is due to latent heat of vaporization, and we have already discussed in fusion. The same thing happens in vaporization also, because this time जो heat हम provide कर रहे हैं वो overcome कर रही है forces of attraction को during boiling or during vaporization. Hence, temperature does not rise and kinetic energy of the particles does not rise. अब इसका भी एक important observation कि steam ज़्यादा severe burn करती है as compared to boiling water. This is because steam has absorbed that much extra heat in the form of latent heat. Hence, it causes more heating, whereas water doesn't have that heat yet. Now, again, what happens when we cool a liquid? अब पहले हमने सॉलिड को हीट किया था तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में. अब अगर हम लिक्विड को कूल कर दें तो ऑन कूलिंग लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अगेन, अब जितनी टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस मेल्ट होता है सेम टेम्परेचर पे वो फ्रीज भी होगा. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस, ड्यूरिंग मेल्टिंग और फ्रीजिंग सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट स्टेट्स. मतलब वो सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड स्टेट में भी रहता है. तो ये दोनों प्रोसेस सेम टेम्परेचर पे चलते हैं. तो वाटर कैन एग्जिस्ट बोथ एज सॉलिड एंड लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, what happens when we cool down a gas or a vapor? तो अगर हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. तो दिस इज कॉल्ड liquefaction or condensation, the process, and that happens for particular the same temperature, means we can say at boiling point of a liquid both of the states occur, liquid as well as gas. दोनों प्रोसेस चलते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन. और इस समय इस टाइम पर इस टेम्परेचर पर दोनों ही फेसेस एग्जिस्ट करेंगी. फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है एंड वाटर गैसियस स्टेट अपनी वेपर फॉर्म में भी रहता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड melting point is the only position temperature at which two different states can exist. Now you can understand water exists as solid below 0 degree Celsius. 0 से 100 के बीच में वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, 100 से अबव वाटर स्टीम की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में रहता है. बट टू टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, वेयर टू स्टेट्स कैन एग्जिस्ट. Next is the SI unit of temperature. As I have told you that temperature can be
described in various two units. Basically, we have discussed Kelvin and Celsius. One more is there, that is Fahrenheit. But out of these three, SI unit, that is Standard International Unit of Temperature, is Kelvin. And Kelvin scale में 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, that is 273.15 Kelvin. And this is the scale which doesn't have any negative temperature. मतलब सेल्सियस फ़ारेनहाइट में नेगेटिव टेम्परेचर्स होते हैं, बट इन केल्विन स्केल टेम्परेचर इज नॉट एट ऑल डिस्क्राइब्ड इन नेगेटिव, बिकॉज जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है दैट इज 0 केल्विन, और 0 केल्विन जो होता है दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस. उससे बिलो टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो. 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं. एंड द स्केल ऑफ टेम्परेचर इस केल्विन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. Now let us discuss how we can convert temperature from Celsius to Kelvin or from Kelvin to Celsius. First, Kelvin to अगर आपने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला. केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. सपोज 55 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, यू विल ऐड 273 एंड यू विल गेट 328 केल्विन आंसर. ऑलवेज रिमेंबर, डिग्री इज नॉट यूज्ड इन केल्विन टेम्परेचर. डिग्री नहीं लगाना वहां पे. केल्विन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट केल्विन टेम्परेचर बाय 273. जितना टेम्परेचर केल्विन में दिया है उसमें से 273 माइनस कर दो, यू विल गेट आंसर इन डिग्री सेल्सियस. अगेन नोट डाउन, सेल्सियस में डिग्री यूज करना है, केल्विन में नहीं यूज करना. तो आई होप दैट ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. नाउ यू कैन सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉपरली. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.